अस्सलाम वालेकुम and good afternoon. अभी इतनी तारीफ होगी कि अब थोड़ा सा I'm feeling the pressure के but it's okay, it's fine. I'll also learn from you and of course it's something that I can share with you. Why not? And I'll try to make it bilingual so that it's better interaction. And I am somebody who do not believe in presentations at all, basically. Because presentations में होता क्या है कि आधे लोग तो सो रहे होते हैं, so the interest नहीं रहता. So I would like it to be interactive and I would rather want you guys to tell me how you want the session to be. So let's start, and I'll start with some case studies very briefly, some global and some Pakistani case studies. So what exactly is marketing? हम उसके बाद जाएंगे marketing होता क्या है. But for me, one liner if you ask me, marketing these days, as I have experienced and learned in sales and marketing in my experiences so far, मुझे लगता है कि marketing is when you connect with the right audience for the right reason. So for example, if Unilever or any company for example has to sell a soap, अब साबुन को बेचने के बहुत से तरीके हैं कि आप उसको कहें कि जी एक कंपनी ऐसी है जो 50 रुपए का साबुन देती है और एक कंपनी ऐसी है जो 30 रुपए का देती है. प्राइसिंग इज वन थिंग एंड यू कैन से कि जी हम इसमें ये क्वालिटीज हैं और ये प्राइसिंग है टू अट्रैक्ट द ऑडियंस. बट एज तारिक साहब ऑल्सो मेंशन, सो कुछ कैंपेन्स ऐसी हैं जो मुझे पर्सनली लगा के बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया कुछ कैंपेन्स ने. कुछ ग्लोबल बहुत अच्छी कैंपेन्स है. फॉर एग्जाम्पल डव ने एक ऐड बड़ा अच्छा बनाया था एंड अगेन खवातीन की बात थोड़ी सी बीच में आ गई. आई सी सम वुमेन देयर आल्सो. सो इसमें इन्होंने क्या किया कि द आइडिया इज दैट ends a certain period of time, for example in the next 3-4 years, what we see as marketers or sales people, we expect कि AI will take over in a way that because इतना data है, so अगर आप सर्च करेंगे ना कि what is the right definition of beauty for instance, so आपको AI ये दिखाएगा कि this is the kind of a woman's face that we call as beautiful. So Dove challenged that. So इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने डेटाबेस में ऐसी realistic pictures खवातीन की दिखाई. Because we are not perfect, irrespective of gender, all of us are very different and natural also. So हमें लगता है because we are self-conscious generally, so we feel कि हमारे अंदर ये मसला है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, किसी को देख के लगता है मेरी शायद so everything is natural. So it is very important to feel proud about whatever you are. That is what I personally feel. And by the way, it was also a journey for me. If I go back and start telling you 15 years, 10 years down the lane, I was also probably not that confident about myself, but I learned that people will only respect you if you respect yourself, and that has to be a very genuine respect. By the way, you should know कि हाँ ये मैं नहीं कह रही कि आप बहुत over confident हो जाओ और आप कहें जी I'm perfect. Of course, you're always in a learning phase and it's always good to learn from others also. But आप अगर किसी inferiority complex में रहेंगे, it is going to take you nowhere. So whatever you want to achieve in life, it is very important कि आपको अपनी जो भी आपकी इच्छाइयाँ हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे अभी यहाँ ख्याल आया कि टेलीनॉर में हमने एक चीज़ शुरू की थी इनिशिएटिव, वो प्रॉब्लम मार्केटिंग का नहीं है बट इट इज ऑल्सो समथिंग गुड दैट आई शुड शेयर. वो ये था कि वी नेवर टॉक्ड अबाउट, सो व्हेनेवर वी हैड ईयर एंड इवैल्यूएशंस, हमने ये कहा कि हम कभी भी टीचर से बात नहीं करेंगे. सो इफ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट माई टीम एंड टॉक अबाउट माई टीम, आई ओनली शेयर कि मेरी टीम के इस बंदे में ये स्ट्रेंथ है एंड हाउ कैन वी लेवरेज दैट स्ट्रेंथ एज अपोज टू जनरली होता ये है ना कि एज लाइन मैनेजर्स यू फील के इस बंदे में 4 गलतियां और आप उसको हाईलाइट करते हैं. So that was also a very good concept related to this. So hence मुझे लगता है कि if you do for your brand or product or your service, if you do the right kind of marketing and associate genuinely it with the right kind of purpose, your brand is definitely going to achieve far more than you would have thought. So genuinity की obviously बहुत importance है and for me purpose is also very important. So Dove ने बड़ा अच्छा ये launch किया. मैंने इनके रिजल्ट देखे थी. Of course Dove had done a lot better than what it used to be. और ये कोई इतनी नई बात नहीं है. For Pakistan obviously these concepts are probably new, but globally तो ये concepts बहुत पहले से शुरू हो गए हैं. Whether you talk about diversity and inclusion, whether you talk about even AI, आप देखें एक बहुत पुराना प्रोग्राम था X-Files. तो हम बहुत छोटे होते थे तब जैसा कि PTV और STM का टाइम था. So उस जमाने में there was X-Files. Somebody told me there was an AI discussion in that program also. So I was very surprised. But then again, coming to that, I think this is the personally what I feel is that कि हमारे ब्रांड्स में वो चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए जो कि है. अब आहिस्ता आहिस्ता now that there is more awareness and now that वो पुराना स्टेट कल्चर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है. Even when you see Shan Foods as for example, आपने देखा होगा EBM के आप इंग्लिश बिस्किट क्या देखते होंगे. So you really feel that there's something attached to that and you really feel very happy when you see such things. And of course
अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि आपका अगर आपने किसी भी मुल्क का माइंडसेट चेंज करना है ना, तो यू रियली हैव टू मेक एन एफर्ट टू दैट। आप लोगों को बताते हैं एग्जाम्पल से कि ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल माई फादर हैज बीन अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन। ही अगर मैं नौकरी ना भी करती तो मेरे फादर ने इंश्योर करना था कि आई वर्क, सो ही वॉज लाइक दैट। तो वो तो मैं चाहते थे कि मैं फौज में जाऊँ क्योंकि था सिलसिला, बट then he also always made sure कि अगर तुमने डिग्री ली है तो you have to work. So now that I think if one father can do that, I think everyone should think like that. And for me, of course, more than that, it is about our country's economy also. So if we have 51% of the people who are women, and if they don't participate in the economy, our country is never going to succeed. That's my take on it. Moving on, ये एक ऐसा ऐड है जो आपको दिखाने लगी हूँ। इट्स नॉट इन फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स फ्रॉम अमेरिका, और ये ऐड है 2019 का, वेयर दे टॉक्ड अबाउट डोंट टेक इट, वो उस तरह जेंडर में उस पर करना नहीं चाहती, बट दिस इज द ऐड दैट जिलिन खानों ने बनाया था पीएनजी बैक इन द डे, एंड दे सेड दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अस एज सोसाइटी टू नॉट support any inappropriate behavior. और यहाँ पे खैर निसार उन्होंने बंदों की है, but don't take it personally. It's a general normal thing. मैं आपको ये ऐड जरूर दिखाना चाह रही थी. So I thought that it would give all of us. What I actually said. Making the same old excuses. Boys will be boys. Boys will be boys. Boys will be boys. But something finally changed. Allegations regarding sexual assault and sexual harassment. And there will be no going back. Because we believe in the best in men. Men need to hold other men accountable. Come on. To say the right thing. To act the right way. Not cool. Some already are. In ways big Yo, man. and small. But some is not enough. Someone treat each other back. Because the boys watching today will be the men of tomorrow. So this is Sunny the ad. So Direct said that in the US, whichever organization will do some policy changing in a way that they would want men to be at their best, as an example for society, they will give them a certain amount of money. So to me, I think it's a huge win, So खैर इनको backlash भी काफी आया है, and the director for marketing for them in North America also faced some death threats after that. But that's okay. That's whenever you want to do something right, it's bound to happen. But I think for me, marketing is the inspiration that you can, if you can inspire your society as a whole, irrespective of gender. I think for me that would be marketing done right. अगर आप सिर्फ एड फॉर द सेक ऑफ एड बना रहे हैं और उसमें आप अनएथिकल, फॉर एग्जांपल एक जमाने में फेयर एंड लवली का बड़ा कॉन्सेप्ट था. So now even when I was in Unilever, we thought that not that I thought, the company thought that fair and lovely is not going to be fair and lovely. So now you must have heard it's glow and lovely now. So the fairness concept is obsolete, very much obsolete. So होता क्या है कि जब आप एक चीज बार बार दिखाते हैं और लोगों में, this is by the way power of marketing. अगर आप एक चीज बार बार दिखाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जाकर उसका इम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है. So marketing, I would say, has the power like no other. You can play with the minds of people. And इसी तरह होता है, अगर आप देखें कभी रात को, मैं तो खैर देखना छोड़ती हैं, जो खबरों के बाद जो प्रोग्राम्स आते हैं, वो वही चीजें रिपीटेटिवली आपको एक नेगेटिव उसमें स्वर्ड में ले जाती हैं, एंड यू गेट डिप्रेस्ड एंड यू थिंक दैट एवरीथिंग इज रॉन्ग. Now you see a lot of people talking against whatever is happening in our country. But the other day I was sitting in a group of people, and the guy from another country, an economist, to my surprise also, he was talking about numbers, and he was telling that पाकिस्तान में जितने लोग जा रहे हैं, अगेन एक बात आपसे शेयर कर रही हूँ, आई एम नॉट श्योर हाउ ऑथेंटिक दैट इज, बट ही सेड दैट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग अब्रॉड इज exactly equal to the number that people used to live a year also. But when you see social media, तो आपको लगता है कि हम तो बर्बाद हो गए हैं. ठीक है, I know there is a lot of crisis, we talk about taxes a lot, मैं तो बात नहीं करना चाहती, but एक mindset बन जाता है आपका. आप अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत अच्छी भी होगी और बुरी भी होगी, it depends on us
and I really feel that people who are in the position of power, it is on us how we want to take our society to. अगर हम अच्छी चीजें दिखाएंगे, हम होप की बात करेंगे, हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे, obviously there are certain things जहाँ पे मेरा भी शायद कोई रोल नहीं हो सकता, I cannot do anything, but there are things that I can do, and what as a person, as a professional I can do, I can do my best and whatever ability or capability I have is to make things better, so that everybody around me feels better. That's what I think, and I think marketing for any brand or product or service can do that. So this is again, मैंने बात इस पे parents believed in that, your peers believe in that, your friends believe in that. If you think that is not right, don't do it. And the best thing about Gillette was that it was, message was very clear. It was that you should not encourage any inappropriate behavior within peers. होता ही है ना, if आपका दोस्त कुछ अलग काम कर रहा होता है तो हम generally उसको encourage करते हैं कि हाँ that is fine, and we have some defending points for that as well. So I think for us to change and make things better, marketing definitely can play a vital role. Difference ये है कि sales में तो देखिए आपने एक product बना लिया, उसमें again there are 10 components of marketing. Lecture में marketing को इस तरह से नहीं करूँगी, but then again उसमें pricing होती है, उसमें आपकी product development होती है, उसमें आपकी market research आ जाती है, आपकी insights and analytics आ जाती हैं, आपकी sales and distribution आ जाती है. So sales का काम तो बहुत बाद में आता है. Okay, so for me, I think any marketing campaign that starts any sort of good conversation for the society. So for me as a marketer, that would be a win. So मैं जो भी अगर कोई ऐसा ad बनाती हूँ, कोई social media campaign शुरू करती हूँ, कुछ करती हूँ, just for the sake of, obviously I would want sales. There's no second thought about it. But if that is my only agenda from brand's point of view, then I am losing, and I will always lose. So again, the times have changed and branding altogether has changed. Now, all the MNCs, big companies, and as I said, मैंने शान की example दी थी आपको, but I think there are a lot of other examples also. I was very impressed with National Foods also. I was very impressed with, as I said, English biscuits, and there are so many Pakistani brands that are now coming up and making a mark in marketing, particularly branding. So that is what we should aim for the common good, because हमेशा से ऐसे ही था, but now more than ever before, if I do something that helps me, it's actually not going to help me. If I do something that is actually going to help all of us together, that is going to make us win, and especially in the time where we are in Pakistan, I think more than ever before, it is teamwork, it is collaboration, it is the right spirit, it is spreading hope and positivity. I think we need it more than ever before. So that's my take on it. Moving on, these are a few kind of objectives that we want to achieve from marketing. As I said, perceptions जो मैंने भी आपसे बात की है कि अगेन ये चीज़ें अगर आप में से कुछ लोग भी अगर इस चीज़ पर सोचेंगे और थोड़ा सा इस पे रिफ्लेक्ट अपॉन करेंगे, तो आई थिंक दैट इज द पर्पस राइटली सर्व फॉर दिस सेशन. दैट इज ऑलवेज challenge your perceptions and norms and whatever your belief system is, because it helped me a lot. I also used to think in a certain way, and for the longest time, मुझे काफी साल हो गए corporate sector में and working with various kind of teams and industries and people, I have learned that there are times, ask yourself one question, and I asked this question for myself 4 or 5 years ago, and I was surprised by the answer, and I asked myself, how many times have I thought that I'm wrong? Honestly, I seldom thought. कोई भी किसी भी आर्ग्यूमेंट में, किसी भी डिस्कशन में, जनरली आई थॉट, आई रिफ्लेक्टेड अपॉन दैट. कभी ऐसा नहीं मैंने सोचा कि क्या who knows that I am wrong in this whole scenario. So think about it. Only then we can, and also tolerance. We should always be open and we should always accept something. If you don't believe in that, that's okay. But everyone again has a right to think or say or believe whatever it is they want to. And this is what I think really needs to change in us. We are not tolerant at all. Globally, मैं कहीं जाती हूँ तो हम देखते हैं कि क्रिसमस की सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशंस हो रही होती हैं, और मैं सोशल मीडिया पे ही देखती हूँ कि कभी किसी ने कोई लगा दी क्रिसमस की तो उसमें ये बड़ी बातें आती हैं कि ये तो नहीं होना चाहिए. So I think again, I'm not trying to tell you what's right and wrong, but I'm just trying to tell you to be more tolerant. Not necessarily if I believe in a certain thing, I'm not, that's not my job. You all have the right to think or believe whatever you want, because that's your life.
सही और गलत का फैसला आपने अपना करना है, मैंने अपना करना है, हर किसी ने अपना करना है. So that's the idea. And then again, as talked about impact, मैंने आज तक काफी बात हो रही है, so I'll not repeat. So for me, these are the most important things. And if we are able, as a marketer, as a brand director or manager or whatever, that if we are able to change behaviors at large, that is the power of branding and marketing for me. And somebody asked me, I think Salia se meri baat ho rahi thi, and she but categorically talked about AI, and she said that let's talk about how AI is going to transform. So I think, as I talked about 95% of the things shifting from AI to AI, so मुझे लगता है कि it has a lot to do with marketing also. So उसमें आप अगर digital presence की बात करें, देखिए अपना generally if you ask me as a marketer to talk about TV ads, honestly I would not be very interested because I know the game changer is now digital. So be it any social media app, be it my direct connect with the customer or consumer, I think that is that. So बिल्कुल अगर आप 10 साल पहले बात करते हैं ना तो मैं कभी I would not have thought that it is going to change. Now in Pakistan we are in collaboration with Google, Facebook, Meta ads की बहुत बात होती है. अभी आपने I think आपने कहा था it's very economical also. राइट तो इसमें आप देखते होंगे कि आप YouTube पर भी जाते हैं तो आपको इवन नॉट इवन YouTube हर ऐप पे आप जाते हैं तो आपसे एक क्वेश्चन है अगर आपके पास टाइम होता तो आप फिल कर देते हैं यू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस ब्रांड और समथिंग लाइक दैट. सो आई थिंक नाउ more than ever before there are two things other than what I discussed earlier that have impacted marketing area काफी ज्यादा. उसमें ये है कि आपका सोशल इम्पैक्ट आप क्या क्रिएट कर रहे हैं. ठीक है तो उसमें कंपनीज बहुत ज़्यादा बात करती हैं अब कि आप किस तरह से यूर गिविंग बैक टू सोसाइटी एंड ऑल्सो यूर गिविंग बैक टू इफ यू आर डूइंग एनीथिंग. हम लेस प्लास्टिक की बात करते हैं पहले नहीं करते थे. अब काफ़ी कंपनीज ने पेप्सिको ने फॉर एग्जाम्पल कोक ने नेस्ले ने यूनिलीवर ने बहुत काम किया है ऑन आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड फॉर इज दैट सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत बात होती है और बड़ी जेन्युइन एफर्ट्स हैं. मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी कि अगर हम जेन्युइनली लोकल कंपनीज की उसके बारे में बात करें या कुछ एक्शंस करें बिकॉज होता ही है. आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू जो मल्टीनेशनल्स होती है ना दे आर गिवन समथिंग SOPs टू बी फॉलोड. सो फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिलीवर की 5 फैक्ट्रीज है पाकिस्तान में, एक चाय की फैक्ट्री है, एक सोप की फैक्ट्री है, एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हम ये बताया जाता था कि जी आपने इस साल 5% रिडक्शन करनी है इन प्लास्टिक्स एंड दैट वाज बाउंड टू हैपन बिकॉज यू नो वी आर गुड इन फॉलोइंग SOPs. बट अगर हम खुद इस तरह के इनिशिएटिव लेंगे अब देखें क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा हो गया है, इस पर भी बहुत काम हो रहा है. अब बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं हु आर एक्चुअली मेकिंग एफर्ट्स. नाउ वी टॉक अबाउट पेपर बैग्स. पहले बात 5 साल से हो रही है, बात पहले नहीं होती थी. So I personally feel very happy about these initiatives and more power to these brands who are making efforts. And of course we should always अभी भी हम जाते हैं काउंटर पे कहीं देखते हैं ना तो लोग वहाँ पे कह रहे होते हैं कि हमें ये बैग नहीं चाहिए और ये नहीं चाहिए. सो आई थिंक देयर इज ऑलवेज सॉल्यूशंस टू दैट बट वी शुड नॉट डिस्करेज सच इम्पैक्ट्स. इट विल एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट. अब आप देखें ग्लोबल वार्मिंग भी इसी से एसोसिएटेड है. कितनी सर्दी तो आई डोंट थिंक मैंने तो फील नहीं की इस साल बिल्कुल ही. बट वही बात है कि इट इज गोइंग टू अफेक्ट आवर कमिंग जनरेशंस एंड नाउ द टाइम वी नीड टू मेक एन एफर्ट अबाउट दैट. Again, ChatGPT is a tool now, used more than ever before. कोई भी बात होती है तो हम ChatGPT से पूछते हैं कि आप हमें इसका जवाब दें. So हम उसको अच्छी चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, right? So you can always and I think it has made our life very easier, especially sitting in Pakistan now. It is up to me what I want to learn, what I want to teach myself about. So AI को बजाय इससे हम ये देखें कि क्या चीज़ें बुरी हैं. मेरे पास तो कोई बुरी चीज़ ऐसी नहीं है. Unless people talk about that it is going to take jobs. If it is going to take jobs, there are certainly going to be new jobs also. You know, so पहले ऐसे बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं एरिया में जो नहीं होते थे जो भी अब हैं. हमारा पूरा जहाँ मैं काम करती हूँ हमारा पूरा डिजिटल का एक उस पर सेटअप है. एंड नाउ मोर देन एवर बिफोर अ लॉट ऑफ कंपनीज आर नाउ हैविंग देयर सेपरेट ई-कॉमर्स एंड डिजिटल फुटप्रिंट जो पहले नहीं होता था. So that is also, so let's focus on the positives as I said earlier. So AI, yes, is going to be to play a huge role. इसमें यूसुफ का भी एक NIC की भी बात करते चले. उसमें आई थिंक आप भी काफ़ी स्टार्टअप पे काम कर रहे हैं on AI. So हर जगह पे बात ये हो रही है. So it is very important to learn and create awareness of what is happening, what good is happening, especially Pakistan में. Because पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं. So I asked somebody कि we don't have many women leaders. Example in a group WhatsApp group पे कहीं मैंने लिखा तो somebody replied and he messaged me 25 women leaders names
इस सेक्टर में, and I was not aware of that. So as I said earlier, it is very important for us to talk about good things as well, right? And to talk more about positive things on social media rather than sharing कि वो फलाने बंदे ने ये आज कह दिया तो ऐसे कह दिया तो हम और डिप्रेस हो जाते हैं कि पाकिस्तान से तो निकलना ही बेहतर है, कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं होने वाला. So that's my take on it. I made a very brief presentation, but not necessarily कि हम इस पे बात करें. I would now, I think, encourage all the questions if you guys have any questions so that I can answer and we can talk more about it. Who will be the first person to ask question? He said, okay, fine, we'll use AI and we'll come up with a. He sent me a sample. It was a nice try, but I called him and I said, there are a lot of things which AI also needs to improve. Like he showed a beautiful model, AI generated model. She was very attractive. And she woke up in the morning, saw out of the window, there was flowers and all that. And then she went to took a bath, and she was taking a bath in her complete dress. And when I was looking at it, suddenly he brought her to the generators, and my generator appears, and her hand like this. I was shocked to see 4 fingers, not 5. So AI also missed these kind of things. So I think we need a lot of improvement in AI, and basic is ideology that how to transform. So just one thing on this. I think AI, what is AI? AI is not a human mind. AI will always, so my take on it is, AI can never be better than a human mind. Because होता ये है कि जितना डेटा सेट्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं किसी मशीन को, वो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ. As I gave you an example of Dove, I am telling that machine कि this is what a road looks like, for example. This is what a machine looks like. So that machine will only take what I have given the input on. So as you said, maybe I don't know, I cannot really comment on that because your child here किसी पास ही होनी थी. But I think that was probably what was given as an input to that machine. And of course, yes, you're right. I think in Pakistan there is a lot of improvement required for sure. But देखिए, for example, I'll give an example of electric vehicles. Pakistan में कितनी electric vehicles हैं? I think top notch. Maybe you guys can tell me the number. I don't know the number, but just giving you one example, Elon Musk ने जब ये अभी तो हम पाकिस्तान में I don't know if that is even feasible or not. अभी तो ये भी डिबेट है ना कि बिकॉज यूजर फ्रेंडली तो होना चाहिए और हमारे पास इतने रिसोर्सेज उस तरह से नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट देयर. सो इफ यू कंपेयर आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ होल विद एनी ग्लोबल हो, तो आई थिंक वी आर वेरी वेरी बिहाइंड. बिकॉज द काइंड ऑफ कन्वर्सेशंस यू हेयर फ्रॉम, एज आई सेड, गूगल से अगर आप जाके कहीं ऑफिस से बैठे और आप उनकी बातें सुने और आप कंपेयर करें तो लिटरली यू फील कि आप तो पता नहीं 5-10 साल पीछे हैं. एंड लिटरली वी आर. सो यू राइट. Basically, AI is the assistant to the human. Yeah. It is the extension of the human, not the replacement of the Yeah, human. absolutely. So it is still child baby. We will improve it with the instruction. The human mind will improve the AI, and ultimately it will become a good assistant to the human. Absolutely. Not replacement of. Yeah, absolutely. The first example that you gave was Dove, and the other example that you gave was of Gillette. I have to learn from you in 2 aspects. Dove used to say that we are a beauty soap, and then they conducted a survey and asked probably millions of women across the globe one question, and the question was, "Are you beautiful?" And you must have read the study, because it's not my domain. मैं थोड़ा कोई और काम करता रहा हूँ, Air Force में रहा हूँ मैं. 98% of the women said, "We are not beautiful." They worked on the 2%. They said, "We have been working by saying that Dove beauty soap, only 2% of the women." Where the 98% of women think that if we are not beautiful. And from then onward, that campaign started, what you're saying, that I am beautiful the way I am. This is what the new campaign said. Which means whosoever could be black with curly hair or straight hair or whatever,
Then they started to target those 98% and their sales went up many times. So this example tells me that it was something negative that they had been doing and they corrected it. That's one part. Gillette, when you run the ad by saying, sorry for long question, because unless I explain that, when you talk about Gillette, it said the best that man can be. But for years and probably decades, the Gillette had been saying the best that man can get. Yes, yes. That spells out an impression to the men, a misplaced sense of entitlement. Yeah, absolutely. Very right. And then it was said that if men want to have this watch, this mobile, or this girl, everything is fair for a man. So they realized that we've been saying the wrong message and giving an unplaced or misplaced sense of entitlement to the men that you can get away with it. And they come up very positively by saying that what the best a man can be. That was beautiful. Now these both ads tell me that those companies realized that we had done a mistake and they corrected themselves and they refocused in a way. Two more short examples. You said Coca-Cola you have association with. In the Olympics, the Ronaldo, the superstar football player, you must have seen and heard and whatever. I don't know. I want to learn from you. Did it intentionally or you paid him the amount? You know what he did? Have you heard of the incident? I think I've heard it long time back. Ronaldo sat at a press conference. Superstar. Now there's a Coke and there's water. So he publicly removed the Coke and took the water. And the debate went on that some people said the Coke had paid for it because they got the negative publicity that he preferred not Pepsi over Coke, he preferred water over Coke. I mean, you can tell me whether Coke paid or not, it did not pay. The Pepsi came up with an idea and gave an advertisement. There is a man eating at the restaurant, the waiter comes and he says that with the food I want to have Coke. The waiter says, is Pepsi okay? Yeah. And then the person at the back gets up saying that, is Pepsi okay? Which means he's trying to say, are you saying it is only okay? Yeah. So that was only 10-second ad, but created a huge controversy, talk of the town, and everybody's talking, is Pepsi okay? So he's trying to prove Pepsi is beyond okay. Having said all this, I want to ask you, do you know any of the brand locally which undid something, or which is they reverted back and switched over, realizing that we've been doing something wrong, and they came up with a kind of lesson drawn. Do you have a local brand of this kind? And this Coca-Cola, I'd like you to comment if you already know the answer. Okay? Did they do it intentionally or? Again, that was not a local brand but a national. But that happened when I was there, so I exactly remember. इसी तरह ये तो खैर हमने बात ब्रांड की करी ना कि आपने मैसेज सही दिया या नहीं दिया. But there are certain times when I have seen के कुछ ऐसी चीज कोई ऐसा ingredient चला गया कि packaging में that was not right and nobody identified that but the company took it down. Again, so it is a mix of ethics and sending the right message. You very rightly said exactly ये story थी Gillette की भी और Dove की और कोक का भी. अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं एंड ऑफ कोर्स अब इतने साल बाद मैंने इतना कुछ बुरा भी देखा है कि आई वुड नॉट मेरे लिए कुछ सरप्राइज नहीं होगा अगर मुझे ये पता चलेगा. आई डोंट नो बाय द वे द आंसर कि उसको पैसे किसने दिए थे यानी. बट अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ आई कैन से मोर देन 80% ऑफ दीज ब्रांडिंग्स नेगेटिव मार्केटिंग और व्हाटएवर इज जनरली पेड. सो बिकॉज यू वांट टू बी इन द न्यूज़ और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है. बल्कि मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊँ मुझे लगता है कि ऑथेंटिसिटी हैज़ नाउ गॉन डाउन द ड्रेन हर चीज़ के ऊपर. अब तो मुझे पता ये भी चला है कि सॉरी भाई ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात है बट आई विल स्टिल से इट कि अब तो जो अवार्ड भी मैं देखती हूँ इवन इंटरनेशनल देयर आल्सो पेड. somebody the other day called me and I am again with a मैं ये बात थोड़ी बहुत हिम्मत से करी हूँ शायद बट आई गॉट अ कॉल somewhere लास्ट ईयर दैट अगर आपने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से अवार्ड लेना तो आप 50,000 देते हैं आपको अवार्ड. रेट आप कम बता रहे हैं. I don't know.
I don't know. तो मेरा तो अब बिल्कुल जो है ना इस पे से एतबार उठ गया है. You know whatever I see people say कि मुझे यहाँ पे ये मेरी अचीवमेंट है तो I really have a question mark कि ऐसा कैसे होता है. But होता होगा. But again, having said that मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि हर जगह ऐसे होता है. But the system also has to work. So I am not at all saying कि हर जगह बुराई है, but क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत आ गई ना. So now everybody wants to be in the limelight, in the news. So you pay and you get whatever you want to. That's it. शॉकिंग कि हालिया प्रेसिडेंट ने रेट गिरा I said last year. हाँ last year was अच्छा जी Thank you very much. Tallk and Maryam जी, मैं जैसा आपको आज हम तो जिंदगी भर पढ़ते आए हैं मार्केटिंग की 4 पीस थे, फिर 6 पीस, 7 पीस सारी चीज़ें थी. आई जस्ट वांटेड टू आस्क के अभी जो हम जितनी प्रोडक्शन आ रही है, जो आगे फ्यूचर आ रहा है, जेनजी का आ रहा है, दे आर बॉर्न इन 97 से ऑनवर्ड्स हैं, और ई कॉमर्स है सारा वो डेवलप यूनिट के लिए हो रहा है, और कहा ये जा रहा है कि नेक्स्ट अभी तो 5% है पाकिस्तान में भी, इट विल बी ऑन द 2030 के बाद से इट विल बी एक्सपेंड होगा. तो हाउ डू यू रिलेट योर प्रेजेंटेशन और योर आइडिया रिगार्डिंग जेनजी के लिए जो मार्केटिंग करेंगे उसके लिए 4 पीस या 7 पीस कैसे डिलीवर होंगे, आइदर फ्रॉम द डिजिटल, क्योंकि अब डिजिटल पर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंसिडर ही नहीं होती, प्राइस प्रोडक्ट प्रमोशंस के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली बिक जाती हैं. हाउ डू यू रिलेट कि जेनजी के लिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होंगे? अच्छा, ये जो 4 पीस का कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी भी ऐसे ही है, और एनी प्रोडक्ट उसका बगैर आप कोई चीज़ बना नहीं सकते. वो 4 पीस क्या है आपने बताया, प्राइसिंग है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, फिर क्या है, प्लेसमेंट है, और क्या है, प्रमोशन है. तो इट इज़ हैपनिंग. जो आपका सवाल है ना, अब वो प्रमोशन डिजिटल है. वो पहले किस तरह की, पहले किसी और तरह की. पहले यूज टू ये हमारे बैठे हुए कलीग बड़े ज़बरदस्त क्लास के डायरेक्टर हैं, सेल्स में अभी, सो ही कैन ऑल्सो आंसर यू दैट, बट आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन इज स्टिल देयर. डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी वैसे ही होती है. सो फॉर एग्जाम्पल इन द कंपनी दैट आई वर्क फॉर, FMCG या टेलीकॉम, कहीं पे फ्रेंचाइज मॉडल है, कहीं पे डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है. सो इट इज़ गोइंग टू बी इंटैक्ट. येस, यू आर वेरी राइट. एक ज़माने में जब हम 100% सेल करते थे ना थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन रिटेल, सो नाउ दैट हैज़ कम डाउन टू, फॉर एग्जाम्पल आई विल नॉट टेक एनी नेम्स, but now that has come down to 60% on average. So 60% is still through retail, but 40% is a huge number. 40% is now on digital. So yes, अगर हम चाहें या ना चाहें, it is going to be on digital. तो आप e-commerce में ले लें या आपको किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेना. बैंक्स में आपको एग्जाम्पल देती हूँ. बैंक्स में आप देखिए, आप कितने बैंक्स के ऊपर आप अपना रिचार्ज करा सकते हैं, पहले आप नहीं करा सकते थे ना. So you have hundreds of platforms. Hence, a customer has hundreds of options. So the times are very good for the end consumer. आप क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी? आप डिस्ट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ काफ़ी चीज़ें देखिए, शिफ्ट नहीं हो जाएंगी मार्केटिंग. कुछ 2 चीज़ों पे बात हम कर लेते हैं. अभी हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में कुछ चीज़ें बड़ी स्लो है. एंड अगेन विद Gen Z, now that you know it is a new generation, they are very tech savvy. So the other day I was in a bank and there was a very learned guy, but certainly not Gen Z. So he said कि मैं बैंक में आके अपना काम कराऊंगा बिकॉज मुझे तसल्ली नहीं है, which is right. वो हमारा ही हाल है सब. ऐसे ही हाल है ना ज़्यादा लोगों का. तो उसको देखते हुए मैं कहीं ना कहीं सोचती हूँ, यस यू राइटली पॉइंटेड आउट कि शायद वो बहुत तेजी से चेंज होगा, बट जो हमारी आगे की जनरेशन है, द गुड पार्ट इज दैट वी आर मोर यूथ, हमारे ज़्यादा यंग लोग हैं पाकिस्तान में. सो यस, द चेंज कैन बी रैपिड, बट देन अगेन इट हैज़ टू बी supported by the right kind of policies also, and it is bound to change. आपने कहा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना रोल है इसमें. मैं कहता हूँ कि ये बेसिकली ह्यूमन मेड चीज़ है ना. देखिए, बेसिकली ह्यूमन है 100 ट्रिलियन न्यूरॉन्स, ठीक है, उसमें ग्लियल सेल हैं, दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो सब हेल्प करते हैं. अच्छा, उसने इन्होंने रिसर्च की तो दे सेड कि 1 के साथ अगर 10 जीरोस लगाएं और उन जीरोस को 11 मरतबा हम उसको रिपीट करके लिखें तो इतने न्यूरॉन के कम्बिनेशन बन सकते हैं ह्यूमन में. अच्छा, जब इतने कम्बिनेशन बन सकते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कंप्यूटर की जितनी भी एज है उसमें आया कि इतने कम्बिनेशन बन सकते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि ह्यूमन ने अपने 5% माइंड को इस्तेमाल किया या 10% को इस्तेमाल किया. तो ये वाली बात जो है ना, जितने कंप्यूटर्स हैं, AI है, व्हाटएवर इट इज, ये गुलाम है इंसान के, ठीक है ना जी. कभी हम इंसान को ओवर नहीं कर सकते. तो इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प जरूर कर सकती है हमारी,
बट हमें खत्म तो नहीं कर सकते। तो ह्यूमन हैज मोर अ लॉट ऑफ मोर पावर देन दिस। देखिए वो डिपेंड करता है कि वो ह्यूमन बीइंग कैसा है। हाँ यही है ना, अगर हमें फारिग बनना है लर्निंग है ना, तो फिर तो ये फारिग है ना, बनना। लर्निंग है ना। हम मार्केटिंग क्या करते हैं, पीपल आर मेकिंग थिंग फॉर टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल। सो अब इसके पीछे क्या है, नीड भी सेटिस्फाई ह्यूमन बीइंग की हो रही है और क्रिएट भी वही तरह का प्रोडक्ट तो नहीं बना। अब उसमें क्या है कि आपकी इनोवेशन है मार्केटिंग में, जिस तरह आप इनोवेशन करते हैं, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आपकी जितनी भी साइंस है कंप्यूटर की, वो आपको हेल्प तो कर सकती है बट आपको कभी भी नेगेट नहीं कर सकती। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जो मोबाइल की बात हो रही है ना, तो मैं जो आज बैठी हूँ ना, ये मोबाइल की वजह से। मोबाइल बुरी चीज नहीं, हमारी यूज करने का तरीका होता है, वो तो पड़ा हुआ है, वो हमें कुछ भी नहीं कह रहा। बट मैं वो बंदी थी जिसने ना तो लाइटें देखी थी और ना उसे पता था कि शॉपिंग कैसे होती है। बट मैं आज वो बंदी हूँ जिसको उसके नाम से बुलाया जाता है। और जो तकरीबन 10 साल से काम कर रही, जो सोशल है, जो मीडिया में आ रही, चैनल पे आ रही है, अब मेरी 2 शॉर्ट फिल्म बन चुकी है। तो ये किस वजह से, ये मोबाइल की वजह से। तो मोबाइल गलत थी, हमारी यूजिंग गलत है, हमारा माइंड के ऊपर होता है कि हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे। तकरीबन 10 साल हो गए मुझे एक सोसाइटी में डिफरेंट चीज़ों पे काम करते हुए। जिसमें बेसिक जो मेरा इशू है ना, वो है एक्सेसिबिलिटी। उसमें चाहे आप बिल्डिंग से ले लें, चाहे आप ट्रांसपोर्ट ले लें। तो मैं कहती हूँ मोबाइल गलत थी, हमारा इस्तेमाल गलत है। I'm CEO of the Language House. So I would like to comment on your notion of beauty. First, as a woman, I have this honor. So you quoted different examples and you have been trying to explain us what they believe in, and now they have changed their notion. So, you know, like in scientific invention even, we used to know that the sun is revolving and then we came from chimpanzee and these have changed. So with time we grow, we develop. So obviously marketing strategies, notions, the slogans would change with time based on the research. But I'm a student of literature, so they say beauty is just a balance. Beauty is in balance. Whatever thing is in balance, this is beautiful. And we can, so you're trying to tell us that in marketing you need to do a lot of research and see what is, but is audience important as well? Because if we take example of Pakistan, in Pakistan our audience for selling a product or services, as I am a service kind of a seller, I deal with people, I deal with communication, I deal with languages. So here, marketing for services, how it is different for marketing a project. This is one of my questions. You can guide me about that. And I have one more question. Okay. And the other thing is how awareness. For example, like I cannot see many young people here. For example, you are of that category. I think you should not say this. You have many. Yeah. No, not in that context. I'm saying because they are the future. Yeah. So what is our takeaway for today, for our young generation? You can guide them that this is what you have learned in marketing, doing for so many years, which we can give to our children and to the next generation. Thank you. Thank you for your question. So I think those 2 questions I'll try to answer them. First, you asked, what is the difference between service marketing and product marketing? I would say it's the same, but now I think again depend करता है आप किस इंडस्ट्री में और आप किस तरह को मार्केट करना चाह रहे हैं. I'll give you global examples. Airbnb is a service, product use करेंगे ना, service, and a lot of other big names are now service. There are a lot of industries that are service. Customer service की बात हर जगह होती है, right? So I think if not fees, but the same marketing principles would apply. Most important would be customer engagement, consumer engagement, whatever you say. So languages की आपने बात की, for example, मुझे exactly तो नहीं पता कि आप क्या कह रही हैं, but language में ना कहीं मुझे लगता है beauty के साथ relation इस तरह बनता है that you are still obsessed with English. Still, a lot of people I think
including me also want to learn English and might want to, I would say कि it's in here because it is ingrained. हम जब छोटे थे स्कूल में तो हमें यही कहा जाता था कि अंग्रेजी सीखनी है, और अभी किसी बच्चे को अंग्रेजी नहीं आती तो वो हमसे भी ज़्यादा प्रेशर है उसके ऊपर कि हमारा बच्चा तो अंग्रेजी नहीं बोलता, you know. So I think when I gave you that example, I said that is what is the situation. It can never be ideal. अभी भी आप एस्थेटिक क्लिनिक पर चले जाएं तो आपको टाइम नहीं मिलता लाहौर में. What does it tell you? Women, or for that matter anyone, a human being, we are still not happy with how we look like. If we are satisfied with how I look like, तो सब कुछ बंद हो जाएगा. आपके सैलून भी बंद हो जाएंगे, आपके क्लिनिक्स वाले बंद हो जाएंगे, प्लास्टिक सर्जरी भी लोग नहीं कराएंगे. And now you see it is more than ever before. Now you see a lot of people changing their how they look like. अब तो ऐसा इतना कुछ आ गया जो पहले नहीं था. And people, you know, मैं शायद वो नहीं कराऊंगी, but I still can say with confidence that majority of the people still do not believe in how they look. They are not still not confident. So again, branding में ना, I can do whatever I can do, but I cannot change you. I cannot force you. It is up to you how much do you want to put in an effort on yourself, how much you want to invest in your self-confidence. And Pakistan में ना, if I have to give one key takeaway for women in Pakistan who want to work, that is self-confidence. Women do not have any confidence in themselves still. So I work for sales for a lot of time, and still women do not apply for sales positions. When you force them, so when I force our HR to say कि जी अभी मेरे कुछ कॉलेज ही बैठे हुए हैं, they can also vouch for that. So whenever we announce a position और हम HR से कहते हैं कि जी हमें आप at least 10% resumes दें लड़कियों को, क्योंकि हम इतना encourage करते हैं, और आप उनको इंटरव्यू करते हैं देते तो मेरे तो भाई ने कहा कि सेल्स तो करना सही नहीं है वो तो. And let me tell you, there is so much of assistance and support. When we talk about all the negatives, I am not saying कि ऐसा नहीं होता, सब कुछ होता है, but at the same time our society is very supportive towards women also. Yes, you can send those students to my institution, the language house, where we groom them and give them confidence to speak. Yeah. So I think businesses might look at it as a business opportunity, and rightly so, right? अभी भी आप किसी को खातून को खास तौर पर कहेंगे ना कि तुम इस तरह करा लो अपना, अपनी शक्ल तो बहुत बेहतर लोगी, she would buy it. So it has not changed, but as a marketer I said that we can always make an effort to change. We can, और जब आप कोई चीज़ ऐसा सेट, आप जनरेशन की ऐड देखिए, आपने लोकल एग्जाम्पल की बात की थी, जनरेशन का क्लोथिंग ब्रांड for local brand in Pakistan, and I love their social media ads. They have women who are not very fair, they have women who are not very smart in their ads. So that, so जब बहुत देखेंगे ना ऐसी खवातीन को, तो आपको लगेगा कि ये मैं ऐसी हूँ तो I am okay. This is normal. That is what marketing is. But again, it's a long road. Yeah. You have to make a lot of effort. Yeah, thank you, sir. आप उसमें थोड़ी सी आपने रेलिवेंसी का या वो स्टिचिंग स्टोरी का आपने बोल दिया, तो हमारे पाकिस्तानी एड्स हैं, इसमें मुझे रेलिवेंसी की कुछ समझ नहीं आती. वसीम अकरम एरियल बेस्ड है, उसमें बात में लेकिन वसीम अकरम को अच्छे पैसे दे रहे हैं. नहीं, पैसे जरूर दे, मतलब ऑडियंस को आप मतलब कपड़े वसीम अकरम तो होता है, या वो जो बर्तन है वो ब्राइड का या लेमनेट्स का आता है, तो उसमें वो सारा डांसिंग सारा वो उन्होंने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया है. बर्तन धोते हुए कौन डांस करता है, मतलब पूरी समझ से बाहर है हमारी एड्स में. तो उनकी रेलिवेंसी किस सेंस में है? एक हमारी सोसाइटी में बड़ी सेंसिटिव उन्होंने बनाई, सेंसेबल एड बनाई है, उसमें वो डॉक्टर बन के आगे एंड पे कह रही है कि पेशेंट वापस आके बताते हैं, मतलब मैंने आज तक नहीं सुना है तो बंदा पेश करके डॉक्टर को जाके वापस बताया कि मुझे बड़ा सुकून मिल गया. उसमें आपने क्या यूज किया, तो इंग्रेडिएंट बता दें, जेल का जो आपने यूज किया, कुछ किया है जिससे आपको वो पेन रिलीफ मिल रही है, वो आपने बीइंग अ डॉक्टर आप गाइड करें. तो इस तरह की कहने को रेलिवेंट स्टोरी होगी, तो वो हमारी एड में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती. I unfortunately have to agree with you because again वही बात है ना कि फिर आप देखते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज को खैर ये नहीं करना चाहिए, इवन लोकल कंपनीज को भी नहीं करना चाहिए, बट अगेन इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, इंटरनल इश्यूज होते हैं, देयर बजट कॉन्स्ट्रेंट्स, अगेन क्रिएटिविटी का प्रॉब्लम होता है. आपकी थर्ड पार्टी जो लोग मार्केटिंग फॉर मार्केटिज्म को आइडिया होगा कि उसमें देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज मैं कह रही मार्केटिंग एजेंसीज, तो दे वुड गाइड यू क्या कैसे करिए एंड हाउ यू वांट टू पिच योर ब्रांड. 4 चीज़ की बात आपने की थी, तो उसमें पोजीशनिंग बड़ी मैटर करती है. आप क्या करना चाहते हैं? वसीम अकरम का अगेन मैं उनके बिहाफ पे तो आंसर नहीं कर सकती, बट ऑल आई कैन टेल यू वसीम अकरम हैज अ ह्यूज फॉलोइंग. So these kind of people talk
charge you for what they are as a brand, as a person. As a cricketer, Wasim Akram has a lot of following. So brands को ये पता है कि जब वसीम अकरम को हायर करेंगे अपने ब्रांड के साथ, तो वो ये मैसेज नहीं दे रहे कि वसीम अकरम कपड़े धोएगा, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि वसीम अकरम इज एसोसिएटेड विद आवर ब्रांड। कितने लोगों को यूनिक्लो का पता है जो ब्रांड, यूनिक्लो का नाम सुना है? यूनिक्लो की स्टोरी भी बड़ी अच्छी है। सो फेडरल इन्होंने अपना हायर किया था एज अ ब्रांड एम्बेसडर एंड दे पेड हिम ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। And when Federer was associated with Uniqlo, so Uniqlo began from there went there. That is what a brand ambassador is. Endorsement जरूर करवाएं, लेकिन वो जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं, You're right. जिस तरह कर रहे हैं, रोनाल्डो फोक साइड पे कर रहा है, नेगेटिव किया, लेकिन उसने एक अच्छे An effort to resolve that issue of a customer. So similarly, देखिए पाकिस्तान का तो मैं कुछ जगहों पे मैं इतना 100% नहीं कह सकती कि कितना इम्प्लीमेंट होती है पॉलिसीज, बट फॉर MNCs इन पर्टिकुलर, आपने सवाल तो लोकल कंपनीज का किया था, बट आई थिंक नाउ दैट मैंने आपको जो मिसाल दी है ना कुछ नामों की, दे हैव बीन हायरिंग पीपल फ्रॉम MNCs, खासतौर पर कराची की जितनी कंपनीज हैं. So what has happened is that mindset has gone into those companies as well, which is a good thing. So they are also changing, and I would like to believe that they are also much more ethical than probably what they would have been earlier. But MNCs का for sure 100%. Even Nestle की एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. Nestle एक टाइम पे बल्कि तरम एंगो फूड्स एक टाइम पे ये तरम को कहते थे लिक्विड मिल्क, but then they were asked and they changed it to tea powder. It is not milk. So again आइसक्रीम तो किसी ने पिछले दिनों दिखाया था कि कुछ आइसक्रीम रहती है, they're not ice-creams. So you cannot market it that way. And अब चीजें मुश्किल हो गई हैं for brands to be unethical, which is a great thing for the end consumer. You have to be responsible for whatever you are putting in your product. Recently, but there's a huge challenge which we face is this influencer marketing which has recently came into the whole scenario. And not again going into the details, I might offend someone, but mostly these family bloggers are, they're dominating this particular enterprise. So every other day we have a request from someone that some XYZ guy wants such and such service which may cost a lot of money, and if you welcome them, you're the best of the whole world, and if you don't, at times even a smear campaign starts. So I just wanted to ask that at your company, or the organizations you have been previously working with, I think that you don't have to go through these challenges. The influencer or maybe a media personality, you just have to get it for the sake of a face for the brand campaign or something. So for the small retail related services which people like me are doing, how do you see this influencer marketing thing? If you can comment upon the ethical side of it and how much it is required. So we think that now to get sales, it's very important that some XYZ bad guy comes to my office and then he has to post a reel. And even they are now charging like 3 lakh, 8 lakh for a reel. Just want to have a small comment on it. No, well, thank you very much for coming. I think you are also doing a great job when it comes to social media. मैंने देखा आपका पेज बड़ा अच्छा है. So I think absolutely right. Such a big pain point, and yes, it is such a big problem for local companies and for startups like yours. Somebody the other day was telling me they have a salon and a very good salon in DHA. So a wife of a big shot came and she said, I'm not going to pay. And then she created a big problem for them. She had done gotten all her services done, but then she refused to pay. So अब again ये बहुत ही मुश्किल चीज़ है. मैं इससे आपको बिल्कुल ये नहीं कह सकती कि उनको करने दें, because I know the person sitting on their mobile phones or computer screens do not know the actual story. So it is a challenge, and it is such an unfortunate thing in Pakistan that TikTokers earn more than us, and there is no comparison. And the problem is that it is us who are viewing them also. It is all about views now. So I think मैं इससे कभी भी आपको मैं आपको बल्कि I think I am with you on that, because this is such a big problem that honestly, if you guys, because you guys are far more pro than me on this, so maybe you can suggest, but I think मुझे तो ये मसला हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है in the near future, because I think some of them are big blackmailers also. They are all blackmailers. Yeah, mostly. I was just being decent for them.
But in jazz, you'll never have to sing major part. And obviously, you won't be getting that. Yeah, Thank you. Last question and comment from. एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं है मेरा, कोई आवाज आ रही सबको? क्वेश्चन तो मेरा सच नहीं है। मैं जो कॉलीग मेरे बैठे हैं जिन्होंने यहाँ सवाल किया था कि वसीम अकरम क्या करता है और वो क्यों याद आता है वगैरह वगैरह, तो मुझे जो एडवर्टाइजिंग थोड़ी सी पता है, जब मैं बचपन में काम करता था एडवर्टाइजिंग में, तो बात ये कि इट इज़ अबाउट रिटेंशन एंड रिकॉल, इट इज़ नॉट अबाउट कंटेंट सो मच। सो यहाँ बैठे हुए आपने जो कहा कि एडवर्टाइजिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, आपने उन 2 प्रोडक्ट्स का जिक्र किया, तो वो प्रोडक्ट का जिनका जिक्र आपने कर दिया वही वो चाहता था जिसने पैसे दिए उस प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए। तो 2 चीज़ें, उससे पहले मैं आगे बात करूं, वी मस्ट फर्स्ट गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू lot of wisdom, lot of depth, lot of understanding, lot of courage, and being open and frank, and fantastic role model of yourself also. So that's remarkable. So round of applause. दूसरी बात मैं जब ये इसके बाद एक दफा ढेर सारी तालियां बजाएं, मजा नहीं आया। My comment on this, Maryam, with your permission, सल्तनत इनकी है, मैं रहा में से बोल रहा हूँ, तो महारत इनकी है। वो ये कि नफ्सियात में, आई एम साइकोलॉजिस्ट, नफ्सियात में 2 एस्पेक्ट हैं सोशल साइकोलॉजी में, जिसको एक को कहते हैं कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस और एक को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस आदमी भूल जाता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो याद रहती है। कॉग्निटिव डिसोनेंस से मुराद ये है कि 2 इररेलेवेंट चीज़ों को आप इकट्ठा कर दें तो वो याद रहती हैं, और 2 रेलेवेंट चीज़ों को 2 जमा 2 मैं अगर 4 कह दूंगा तो आप भूल देंगे मकबूल बाबरी ने क्या कहा था। अगर मैं कहूँगा 2 जमा 2 5 होता है तो आप मकबूल बाबरी को याद रखेंगे, क्या वो बंदा अच्छा जो कह रहा है 2 जमा 2 5। सो कॉग्निटिव डिसोनेंस इज सो इम्पोर्टेंट इन एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन दैट इट क्रिएट्स अ रिटेंशन and it also creates a recall of those events. So in advertising, they're very smart people, very very smart people. They play with our mind and they go along. Ethical marketing की भी थोड़ी सी जिक्र कर दूं तो 3 इनसिक्योरिटीज हैं। एक इनसिक्योरिटी है नीड इनसिक्योरिटी, do I need it? Second insecurity है market insecurity, which means is this product available for the same price with same qualities at somewhere else? And third insecurity कि transaction होगी कि नहीं होगी। मैं पैसे तो मुझसे ये ले लेंगे, चीज़ भी मुझे बेच देंगे, बाद में ये निकलेगी वो चीज़ जो इसमें है कि नहीं है। एंड दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ पीपल वी आर रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट व्हिच वी कैन बाय एट 1/4 ऑफ द प्राइस टुडे, बट द हाउस विल गेट इन 3 years. And people will mostly say नहीं यार बन जाएगा ना तो 2 करोड़ फालतू देके खरीद लेंगे। It is because of transaction insecurity and also knowing that what it will create. So marketers play this role fantastically and they know how to go about it. Maryam, it was your particularly thankful to you for taking time out of obviously to all of you and all of you obviously. But I think Max जैसे लोग जो है ना, of course are a big inspiration to all of us. I'm really honored that you're here. Thank you so much.